let's have a quick look at some of the very important questions of Principles of Good Writing. The chapter is written by L.A. Hill, and what does he say in the chapter? Writing is 99% hard work and 1% inspiration. Discuss. In this essay, Principles of Good Writing, L.A. Hill has brought out the fundamental principles of writing well. We learn to write by writing. It is no use waiting for inspiration, which will never come until we start writing. तो इस ऐसे में राइटर यही बता रहे हैं कि अगर आप इंस्पिरेशन की वेट करते रह जाओगे तो वो वेट कभी खत्म नहीं होगा. So it's better to start writing as soon as possible. The author says that writing is 99% hard work and 1% inspiration. Inspiration is just a starting push button. The rest is efforts and hard work. Even the famous writers who were very well read hardly got any inspiration. They developed their own style and established their genre. The writer says that if we keep our eyes and ears open, we can get plenty of ideas to write about. Every day, we should read newspapers carefully. We must keep a notebook also in which we can note down things that we notice or ideas that come to our mind when we are walking, reading a book or a magazine. We should take genuine interest in everyone we meet and in every incident we see. So that is all about that writing is 99% hard work and 1% inspiration. This question is discussing this point. Next is, how important is presentation in writing? And this is a very important question. After every alternative year, this question is set in the paper. How can one present one's writing in an interesting manner? According to L.A. Hill, presentation is of great importance in good writing. To capture the attention of a reader, presentation should be very attractive and interesting. तो अगर आपको जैसे अच्छा खाना पेट में बाद में जाता है, आप उसका टेस्ट बाद में लेते हो, पहले आप उसकी प्रेजेंटेशन देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो. सेम इज विद राइटिंग. इफ इट वुड लुक अट्रैक्टिव, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तभी आपको पढ़ा जाएगा, आपको वैल्यू किया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू राइट रियली बैड, nobody is going to read your write up and you will definitely be not given good marks. तो बहुत ज़रूरी है साफ लिखना, प्रेजेंटेशन का अच्छा होना. So it should be clear in its aim. तो जो भी आप लिख रहे हो वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप बात क्या करनी चाह रहे हो. The very first paragraph of one's writing should show writer's subject. तो जो बहुत पहला आपका पैराग्राफ है, that should actually grip audience attention. Readers का attention वहाँ पे grip होना चाहिए. And various points of view. तो फर्स्ट पैराग्राफ में बहुत क्लियरली ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए. The very first paragraph of one's writing should show the writer's subject and the various points of view. The opening paragraph should capture the attention of the reader. It should show him what we are writing about and why. There is no harm in giving a surprise to the readers. So we can surprise the reader in the opening paragraph. We may do it by putting forward a new and paradoxical point of view. अगर आप child पे paragraph लिख रहे हो या आप fathers पे लिख रहे हो, you can always start it with a paradoxical statement that a child is the father of man. और एक बार पढ़ने वाला ज़रूर देखेगा कि what does it mean, क्या लिखा है इसमें, आगे पढ़ के देखो. और अगर आप ऐसा पैराग्राफ शुरू करो कि I can never forget the day when I met a lizard, or I can never forget a day when I fell down into a ditch. So readers are going to actually read that what happened when you fell in a ditch. आप गिर गए, आप भीग गए, आप भूल गए. So such kind of surprises are always welcomed by the readers. Next, we must have strong and convincing arguments in the remaining parts of our piece of writing. तो बाकी के राइटिंग में हमें बहुत कन्विंसिंग पॉइंट ऑफ व्यूज भी चाहिए. The main body of our piece of writing should have relevant material and it should give good arguments in support of the view.
We should come to the point at once. We should say what we think is right. We should avoid irrelevant material and come to the conclusion. The last paragraph should bring our piece of writing to a satisfying end. The reader should have a clear idea of what we have been saying. तो जो भी हम कह रहे हैं वो रीडर को बहुत अच्छे से क्लियरली पता होना चाहिए. सो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं. And all the questions are interrelated. The most important one is, what are the do's and don'ts of good writing? क्या फॉलो करना है और क्या नहीं करना. इन्हीं पॉइंट्स में आप प्रेजेंटेशन की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं. इन्हीं पॉइंट्स में आप बता सकते हैं that it is important to start writing than to keep waiting for the inspiration. और अगर आपने ये पॉइंट्स कर दिए, you are done with your chapter. Therefore, the very important question is, what guidelines should one follow to write well? बहुत important point है. क्या क्या करना चाहिए कि आपको writing आ जाए, आप अच्छा लिख पाओ. So, following are the guidelines which one should follow to write well. First is, think clearly and logically. Next, read widely and carefully. तो clearly सोचो, logically सोचो और फिर logically आप लिखोगे. और बहुत पढ़ो और बहुत केयरफुली पढ़ो जो भी पढ़ रहे हो. और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू प्रैक्टिस वेल, इम्प्रूव योर वोकैबुलरी, राइट अगेन एंड अगेन रेगुलरली, बार बार लिखते रहें, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें. हार्ड वर्क फॉर इम्प्रूवमेंट चाहिए आपका. सो वर्क हार्ड फॉर इम्प्रूवमेंट. कीप योर ears and eyes open to find new topics. Read the newspaper daily and carefully. Develop your interest in others. Keep a notebook to note down important things. Write according to the interest of the reader. Presentation should be good. Use relevant material only. Conclusion or the last paragraph should be clear. Be honest in writing. Express your ideas clearly. Write in simple language. Follow the same style of writing. ये नहीं है कि एक आपने बहुत अच्छा लिख दिया और दूसरे पैराग्राफ बिल्कुल उसको सपोर्टिंग पैराग्राफ नहीं है, तो तभी आपकी राइटिंग खराब हो सकती है. सो दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन राइटिंग वेल. दीज आर द पॉइंट्स जो आपको अच्छा लिखने के लिए फॉलो करने हैं. और अगर ये फॉलो कर लिया आपने, रियल लाइफ में भी काम आएंगे और आपके आंसर्स में भी काम आएंगे. इसके बाद नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, व्हाट शुड वन अवॉइड इन गुड राइटिंग? आपको गुड राइटिंग में क्या अवॉइड करना है? सो फॉलोइंग आर द गाइडलाइंस विच वन शुड अवॉइड वाइल राइटिंग वेल. तो क्या क्या अवॉइड करना है? सबसे पहले, डू नॉट वेट फॉर इंस्पिरेशन. 99% इज हार्ड वर्क एंड 1% इज इंस्पिरेशन. तो कभी भी किसी इंस्पिरेशन की वेट ना करें, शुरू कर दें लिखना. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अवॉइड करना है वो है अवॉइड इररिलेवेंट मटीरियल. तो इररिलेवेंट जो मटीरियल है उसको अवॉइड करना है, इररिलेवेंट मटीरियल नहीं लिखना. Do not force upon the reader your private ideas. अगर आपको कुछ पसंद नहीं है या आप किसी को लेके बड़े प्रेजुडिस्ड हो, हेट्रेड रख रहे हो, नफरत कर रहे हो किसी चीज को, तो लोगों पे ये चीज थोप नहीं सकते आप राइटिंग के थ्रू. Do not try to impress the reader. और रीडर को इम्प्रेस करने की भी जरूरत नहीं है. आप बिना बात के उसको बहुत अच्छा या सिर्फ इंप्रेशन जमाने के लिए टफ नहीं पेश कर सकते. एक बार अगर आपको रीडर ने छोड़ दिया, दोबारा रीडर आपको एज अ ऑथर एक्सेप्ट नहीं करेगा. सो डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस द रीडर. बी वेरी जेन्युइन. डू नॉट कॉपी अदर्स. किसी का और का स्टाइल कॉपी करके भी आप कुछ नहीं कर सकते. डू नॉट बी आर्टिफिशियल. जो हो जैसे हो वैसे ही बने रहो. डू नॉट बी आर्टिफिशियल. डू नॉट राइट इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में आपने नहीं लिखना. डू नॉट स्टेट ऑब्वियस थिंग्स. जो चीज़ें सबको पता हैं, जो बड़ी ऑब्वियस सी हैं, बहुत क्लियर हैं, उनको बार बार स्टेट करने की, बार बार बताने की जरूरत नहीं है. सो दीज आर द डोंट्स, द थिंग्स विच यू नीड टू अवॉइड. लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है समराइज हिल्स व्यूज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ गुड राइटिंग, तो यहाँ पे आपको डूज और डोंट्स दोनों इकट्ठे बताने हैं. कैसे? L.A. Hill has given some principles of good writing in the given chapter. He says that the writer should follow the following points to write well, which are: think clearly and logically, read widely and carefully, practice well, write in simple language, be honest in writing, express your ideas clearly, improve your vocabulary,
Then he says that we should avoid the following points to write well. Do not wait for inspiration. Avoid irrelevant material. Do not try to impress the reader. Do not copy others. Do not be artificial. Do not write in complex language. Do not state obvious things. Do not force upon the reader your private ideas. I hope this is going to be helpful for all those students who had not been fortunate enough to attend the regular classes, और वो सारे प्राइवेट कैंडिडेट्स जो लास्ट मोमेंट पे कुछ ढूंढ रहे होंगे कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हम पेपर में कल कमाल कराएं. So this video is dedicated to all those students who are working really hard but they somehow are not able to pay proper attention, the required attention to their studies. So all the very best, and I hope this video is going to be helpful in preparing this chapter.